this is the discussion on RAMSHARAN JOSHI, senior journalist and activist and writer's autobiographical book, The Bonsai of Time. And this is the second version of that. And we discussed overall why he wrote it and what are the incidents in last time. इस बारे में इस एपिसोड में हम जोशी जी का पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा जोशी जी के साथ. और जोशी जी, you are free to talk in English and Hindi. Since my Hindi is थोड़ा सा problematic, I may shift करेगा हिंदी और इंग्लिश के बीच में. It makes no difference. Okay. Well, thank you. And so Joshi ji, you yes, let me say a few words. Yes. At the very outset of this session, I would like to convey my thanks to you and your team and the translator, Mr. Muhammad Anas, and editor Amit Sen, and Dr. Vasanti Raman, who wrote the foreword of this book. Because I consider it is basically a teamwork. This writing and translation of the book, because it is a very voluminous book, so it is naturally it is a collective effort. Like my son and Muskan, they also polish the language of the translation. So it is my responsibility to convey thanks and regard so and gratitude to all of you. So now, so they did it. It is because it's you, Joshi ji, because our respect towards you. So हम लोग आपका पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं आज. आप अपना करियर शुरू किया, जर्नलिस्टिक करियर हिंदुस्तान समाचार से. तो हिंदुस्तान समाचार एक आरएसएस का एफिलिएटेड न्यूज एजेंसी था, अभी भी है मेरे ख्याल में. वो कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? देखिए, 1967 I joined Samachar, Hindustan Samachar. Before that, I worked with them as a typist come a TP operator. Where after completing my graduation, I was promoted to the rank of reporter. So I started working as a correspondent. My first posting was Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. And I continued with them working till 1969. Okay. But what happened? Of course, you are right. Is that this RSS, this multilingual news agency, Hindustan Samachar, was sponsored and controlled by RSS. No doubt, undoubtedly, the RSS Pracharak, they were the editor, the manager, and others were holding the very important post, no doubt. But one thing I can say that during my working with them for 3-4 years, I did not feel much political problem or ideological problem from them. I want to put it on record. There was not much pressure, but at the same time, the employees and journalists, they were very much underpaid, and those who were pro RSS, they were paid very much. They were timely paid, but जो दूसरे लोग थे इसमें मैं भी शामिल था, and ultimately we decided to form a union in 1969.
And for the first time in the history of Hindustan Samachar, a union of employees and the journalists was formed in 1969. And in fact, we staged a dharna, we went on a strike, and most of the papers like a New Patriot, the Link, a Statesman, they covered our dharna, the demonstration against the management. And Okay. not only that, the Blitz, जो ज़माने का एक weekly Blitz that Newspaper, was sir. edited by Mr. R.K. Karanjia. Yeah. And the Blitz uh, covered my struggle against the management about Okay. at least in more than 1.5 page, and that published in all the edition of the Blitz, whether it was Hindi, Marathi, Urdu, and English, Yeah. and that struggle continued. But ultimately, because I was transferred from Delhi to Nagpur, and I refused uh, to be transferred to Nagpur, and Correct. ultimately I decided to quit the organization. So इसका मतलब है कि you are first, आपका पहला पॉलिटिकल स्टेप था कि ये हिंदुस्तान समाचार में जो सेग्रीगेशन था आरएसएस Exactly. कार्ड Yes, कार्ड होल्डर्स और रेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट का yes, जो yes. मुद्दा था आपने आपने उड़ा दिया और आपको पनिशमेंट ट्रांसफर कर दिया उसने. Yes, you are right. Yeah. I was sent on a punishment transfer to Nagpur, but I refused. And in fact, I approached the Delhi Union of Journalists, and they took up my case and fought it. And ultimately, I decided that it is the right time when I should quit this organization, which is controlled by uh, some people from background. Okay. Yes. So they didn't But you can they, say they, my you didn't initial political exposure or जोशी जी ideological एक मिनट एक exposure. मिनट आपने Yes, ये जो मुद्दा उठाया आप उस समय दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं किया आप सिर्फ आप एक वर्कर था उधर उसका yes, वजह से आपने किया बिल्कुल. हाँ, आप बिल्कुल. इसमें पॉलिटिकल नहीं, नो, आप ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं किया. और मैं उस समय इतना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को इतना समझता भी नहीं था. अ, लेकिन मैंने केवल वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए किया. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक आपको बतलाऊँ. उस समय के बड़े लेबर लीडर दत्तोपंत ठेंगड़ी, ही वाज़ एन आरएसएस मैन. And when we approached him to become the president of this Hindustan Samachar Employee Union, and he refused. No, please don't make me the president, otherwise the Nagpur will not allow me to work. So please, and then he recommended that we should meet Mr. S.M. Joshi, who was a socialist leader. And when we met Mr. S.M. Joshi, he was staying in Delhi, I think in Canning Lane, and he willingly उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रेसिडेंट बनने को तैयार हूँ. एंड ही टुक अप आवर केसेस, यू सी, okay मिस्टर so एस एम उसका यू no no so so फेमस सोशल. my question is now you are in the left camp, you become an activist of the left in the left side of Yes, the politics. How did that yes. happen from an RSS agency to the left, being a left activist? What made you It's get into that space? it is very though it is a very long story, but मैं इसको बहुत थोड़े में कहूँगा. when I uh, when I joined Samachar Bharti, a parallel multilingual agency at that time, and the Samachar Bharti hired me as a reporter and sent me to Agartala to cover this struggle. The Bangladesh liberation war was going on. So I was sent to Agartala, lived there 6 or 7 months there,
और उस समय मुझे आइडियोलॉजी का धीरे-धीरे अ, पता लगने लगा कि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। आई केम इन कॉन्टैक्ट विद द नंबर ऑफ द लेफ्टिस्ट लीडर एंड सोशलिस्ट लीडर in Agartala and Calcutta, and then I decided to study the Marxism systematically and socialism systematically. What are the fundamental differences between Marxism and socialism? So उस समय मैं फिर कलकत्ता आया फिर एंड इस 72 में मैंने फाइनली तय किया though I was selected by Dinman, I tell you, I got the offer from Times of India uh, as a correspondent for the Dinman. But ultimately, I decided no, I should be a full-time professional revolutionary, and I joined the rank of the left activist in 1972. और Okay. मैं 2 साल तक काफी काम किया. इसके बाद then I developed some differences with the with the Marxist-Leninist party, CPIML, Okay. on certain issues. Like I was not prepared to call the Soviet socialism, Soviet social imperialism, and Mao Zedong as our chairman. No, I told them, no, it can't be. The America is still a principal contradiction in the world. So, because and the अमेरिका आज भी साम्राज्यवादी शक्तियों का नेता है, इसलिए मैं सोवियत सोशल इंपीरियलिज्म नहीं कह सकता और माओ से तुम हमारी चेयरमैन नहीं हो सकते. वो एक बड़े लीडर हैं, महान लीडर, नो डाउट. लेकिन हमारे यहाँ जो चेयरमैन होगा वो भारत का ही हिंदुस्तानी ही होगा. एट द थर्ड पॉइंट वाज दैट हम लोगों को कास्ट की समस्या को भी समझना होगा. जैसे कि सोशलिस्टों ने, डॉक्टर लोहिया वगैरह ने समझा है कि हमारी सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा. अल्टीमेटली मैंने अल्ट्रा लेफ्ट या CPIML, उसमें भी कई गुट बन चुके थे, कई बिखर चुकी थी. मैंने फिर CPM को ज्वाइन किया 73 में और आई बिकेम ए होल टाइमर ऑफ द पार्टी. कैन यू इमेजिन, होल टाइमर ऑफ द पार्टी. और दिल्ली का जो लाल झंडा यूनियन था उसमें हमें पॉलिटिकल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया. Okay. या Okay. So you are transferred from non-political, what you call non-political young man to a political man. वो हो गया कलकत्ता और अगरतला में. Am I right? You are right. Calcutta used to be the Makkah Medina of politics, the right politics in those days. Okay. Oh. Yes, But yeah, you yourself say that you are from a very feudal background. Your life threw up many challenges and you took it on rightly. right, yeah, Education, job, everything. You took yeah, it on rightly and become what you are. So it is from that feudal background to the left. Generally, people are, they say that even today, like we heard that in Supreme Court, Solicitor General of India saying that Gautam Navalakha cannot stay there because there is a CPM library down there. So that kind of approach of the system and the people, that communists are yeah, a big no-no, the godless people, all that things. From there, you didn't have that kind of inhibitions because your background is, the people in your background, You, with similar background had this inhibitions about communism and leftism and socialism. How did you overcome that? you see, Frencharian, whatever I could learn or whatever I could sharpen my ideological consciousness, that is uh, because of my experiences, the variety of the experiences, the objective condition. You see, the books of Marxism I read quite late.
not early in the beginning. मुझे अपने जिंदगी के तजुर्बों ने, एक्सपीरियंसेस ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है. और मोर ओवर, I was not a blind follower of Marxism from the very beginning, because uh, no ideology अपने आप में बहुत कंप्लीट नहीं होती, बहुत सारी बदलती रहती हैं. 19th सेंचुरी से लेकर के 21st सेंचुरी तक there has been there have been sea changes in the world. So the objective realities or conditions have also undergone sea changes. So whatever the condition existed in 19th century or during the Marx time uh, do not exist now. So let us keep in mind the the current objective condition, material condition. इसको मैंने हमेशा जाना. Like take the caste factor, which plays very important role in forming the classes in India. Earlier in the beginning, no Marxist leader was prepared to accept the reality. But I remember before the death, Mr. Our late Indrajit Gupta, the General Secretary of CPI, admitted that yes, we spent a lot of time on classes, but we could not understand the how caste, what is the caste structure, and how it plays a decisive role uh, in forming the society and politics and the political economy in India. And it's the same thing, Jyoti Babu also admitted just before the death, Okay. before the death, uh, Hmm. he gave interview to Frontline, and in that interview, he Okay. admitted, So that's yeah, we ideology. were, yes, हम आपके आपके अनुभव का साथ आते हैं. आपने yes, एक अपर कास्ट फैमिली में पैदा हो गया और आप जो सीपीएम में उधर दिल्ली में काम किया, उधर जो था सफाई कर्मचारी लोगों के साथ था. ज्यादातर वो कर्मचारी लोग लोअर और कास्ट. ये वाटर वर्क्स के लोग थे, हाँ. कॉरपोरेशन के लोग थे, हम्म. दलित लोग थे, हम्म. हरिजनों की बस्ती में हमको जाना, ये सब हाँ. करते थे. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? will they will did they accept you as one among them, or is it like पंडित जी आ गया हमारा काम करने के लिए? ये क्या था? What was नहीं your नहीं, experience? let's be very frank. Initially, they did not accept me. It took some time. कुछ धीरे 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 कोशिश की कि कैसे डिक्लास किया जाए, अपने को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद देम, with their style of living, with their problem, with their worries. So it हम्म. took some time, but ultimately एक तो बड़ी अजीब सी घटना घटी, मैं 1 मिनट में शेयर करना चाहूंगा. एक बार एक दलित के यहाँ अ, शादी थी और उन्होंने सुअर का मांस पकाया था बहुत सारा. हम्म. और तो मैं और एक और थे मेरे साथ, मिस्टर अशोक चक्रवर्ती, वो जनवाद निकाला करते थे. हम दोनों को इनवाइट किया कि आज आपको खाना, शाम को हमारे साथ खाना है, देखिए आपके लिए हमने क्या बनाया. तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने के चक्कर में और डी क्लास चेक करने के लिए, डी क्लास हाउ, भाई चलो डी क्लास करो, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो हेम था, या वो ये कहा जाए उसका सुअर का मांस, वो हमने खा लिया. और क्योंकि सुअर का मांस उसमें फैट पहले से ही होता है, तो उसको डालडा में उन लोगों ने पकाया था. उस जमाने में डालडा बहुत चलता था और हम्म. हम लोगों ने खूब खाया. Nothing. What happened next day? Next morning, we became sick, fell ill, and we were almost bedridden for 15 days. मरते मरते बचे. तो ऐसे Okay. ऐसी कई घटनाएं हैं. जैसे कि पार्टी से तो बहुत कम पैसा मिलता था, मैंने लिखा भी है सब. तो हम्म. एक टाइम भूखे भी रहते थे. एक टाइम हम्म. एक कप, एक पाव दूध और एक केले से महीनों सालों काम चलाया. मुझे पेप्टिक अल्सर भी हुआ, काफी बीमारियां भी हुई, Okay. और उससे 1-2 बार खून भी आए, 2-3 बार इलाज कराया. तो ये तो देखिए, दिस इज ऑल इन द
टीम। आई मीन ये तो होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा मैंने काम किया, ये Okay. होगा। But या your work, you started the Bandhuva Mukti Morcha along या with Swami Agnivesh. आपका या रिपोर्ट मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा हो गया, उसके वजह से आपको नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में बुलाया गया। और आपका जो प्रोड्यूसर है, सक्सेसर है, जो विद्यार्थी, उसको नोबेल प्राइज मिला। या Yeah, so what you initiated, what you reported, wrote, initiated, uh, from that moment एक आदमी को नोबेल प्राइज भी मिला। आपने जर्नलिज्म में आ गया, अलग बात है। सो वो कैसे आ गया था? वो बंधुआ बॉन्डेड लेबर सेक्टर में आप कैसे अट्रैक्ट देखिए हो गया? कैसे मैंने वहाँ? हाँ, मैंने बॉन्डेड लेबर पे बहुत लिखा, यानी हिंदुस्तान की एग्रीरियन क्राइसिस को लेके मैंने बहुत 72 से लिखना शुरू किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान, कई मैगजीन्स में मैंने बहुत लिखा, यहाँ तक कि फ्रंटियर में भी मैंने लिखा, और कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और क्योंकि मैं नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट उसमें जब क्योंकि मेरे खिलाफ मिसा वारंट था इमरजेंसी में, ये अलग बात है कि मुझे बेसिकली लेट्स कंसंट्रेट ऑन आपका ये बॉन्डेड लेबर सेक्टर में कैसे हाँ मैं या कैसे आप घुस गया? वो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में था, उसके पहले कैसे हो गया था? देखिए हाँ, मैं उसी पे आया कि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा काम ये करा है सर कि पूरे हिंदुस्तान की जगह-जगह कैंप लगाना, बंधुआ मजदूरों को लिबरेट करना, उस समय तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। Lakhs of bonded labor, the agricultural laborer were in bondage for generation to generation. So there was a project, एक, और मुझे नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में रखने में मैं याद करना चाहूंगा डॉक्टर बी.डी. शर्मा, बी.एन. युगांधर, पी.एन. हक्सर, रघुनाथ रेड्डी, they helped me a lot. I tell you, within No, two, no, but why? yeah, My question is, जोशी जी, yeah, आपने नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में काम किया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा को yes. बाद Mm-hmm. में खड़ा किया। Mm-hmm. उसके पहले आप कैसे इस इंटरेस्ट, आप बिकॉज आप दिल्ली में था और न्यूज़पेपर में काम किया और हिंदी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, ये कैसे आपका इंटरेस्ट उधर कैसे गया? आपका Yeah. पॉलिटिक्स का वजह से या कुछ ऐसे हो गया था? नहीं, यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 1971 में दिनमान, सिस्टर पब्लिकेशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, इन 71 में मुझे भेजा गया था बस्तर ट्राइबल एरिया में। क्यों? कि उस समय 71 में इलेक्शन हुए थे, जनवरी 1971, और मैं उस समय छत्तीसगढ़ गया, बस्तर गया, दंतेवाड़ा गया, पूरे ट्राइबल एरिया में गया, इधर राजस्थान के बैकवर्ड एरियाज में गया, और उस समय मेरा एक्सपोजर जो हुआ एग्रेरियन प्रॉब्लम से, ट्राइबल प्रॉब्लम से, दैट एक्सपोजर मोटिवेटेड मी टू थिंक अबाउट द एग्रेरियन सिचुएशन इन इंडिया। ये तो उसका बेसिक था कि अगर मान लीजिए मैं 71 में बस्तर नहीं जाता, ये बाड़मेर जैसलमेर नहीं जाता, फेमिन मैंने कवर किया दिनमान के लिए, मैं नहीं जाता, तो हो सकता था कि मुझे मोटिवेशन ये नहीं मिला। तो मैंने जैसा कि शुरू में कहा, ये एक्सपीरियंसेस जो थे मेरे खुद के, उससे मैं मोटिवेट हुआ, उसने मुझे चीजें सब सिखाई। किताब Okay, से मैंने कम सीखा। okay. But या the related question is, स्वामी अग्निवेश था बंधुआ मुक्ति मोर्चा का पहला प्रेसिडेंट और आप सेक्रेटरी था। नो, हाँ, the Banba Mukti Morcha was founded in 1981, and I was the founding general secretary, and Swami Agnivesh was the founding president. But हाँ, I resigned from Banba Mukti Morcha organization in 1984 over certain ideological differences. Uh,
and Mr. Kailash Satyarthi succeeded me. And my uh, uh, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था फॉरेन विदेश से मदद लेकर के और ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा चलाना। मैंने कहा नो, अगर आपको बंधुआ मुक्ति मोर्चा को बंधुआओं को लिबरेट कराना है तो विदेशी पैसे से नहीं, we will raise fund domestically. We will raise fund from our own petty capitalists, the industrialists, not from Ford Foundation or something. Over this issue, I had a serious differences with Swami Agnivesh, and ultimately I tendered my resignation, and I was succeeded by Mr. Kailash Satyarthi. That is Okay. Yeah. Kailash Satyarthi is a Nobel Prize winner, as everybody yeah, knows. yeah. And इसका एक और बात है, आपका ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन बनने का काम हो गया नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का काम के वजह से. Yeah, Am I right? right. You are Okay. right. Okay. So that was that time you were in National Labor Institute during emergency. उसके बाद आपने उधर छोड़ा और फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा. But meanwhile you are joined mainstream media, which is now Yeah. India as the Delhi In bureau chief. 1980. Yes. 1980. So, yes. So how did that happen? Because that is a major decision, and you stayed there for almost 20 years. Yes, sir. 20 years. बहुत मेजर डिसीजन था कि मैंने सोचा कि अब मुझे वापस जर्नलिज्म में आना चाहिए। और ये इंसिडेंटली उस समय पोस्ट खाली थी नई दुनिया की ब्यूरो चीफ की, और मिस्टर राजेंद्र माथुर ही वाज द चीफ एडिटर, और उन्होंने कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको ये बनाते हैं। तो हमने आईएनएस बिल्डिंग में ऑफिस बनाया, मैं ब्यूरो चीफ रहा और लोगों को अपॉइंट किया। जे न्यूज के 2-3 बंदों को मैं लाया। आई वाज गिवन ए फुल लिबर्टी टू अपॉइंट एनीबॉडी। सो ये तो मानना पड़ेगा कि उस समय के प्रोपराइटर एंड एडिटर दे बैक्ड मी। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि 1 साल तक आईबी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरा नहीं दिया। इससे पीआईबी का जो कार्ड था वो मेरा लटका रहा, और 1 साल के बाद हुआ। और उसमें मजे की बात ये है कि राजेंद्र माथुर और मैंने एंड प्रोपराइटर दो जो वर बेसिकली कांग्रेसी, उन्होंने उनसे कहा कि अरे भाई आप कोई दाऊद इब्राहिम बनने थोड़ी गए थे, आप क्रांति लाने गए थे। नहीं आई क्रांति, क्या हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। दोज वर द डेज, the different tribe of the proprietors and the editors. Yes. In today's environment, it is a unimaginable. Yeah. I have been seeing you from 1981. I think in INS I started coming to INS soon after my IMC, and you know that I was a part-timer with Samachar Bharati for writing on South Indian politics for 1 year. Oh, It was my first reporting experience in Delhi. So it that was the time when I started coming to INS. I have been seeing yeah, you. I could never imagine with your look and the way you this thing that you have done all these things. Now knowing you and reading you, I think I should have been interacting with you long back. not now. That time it's right. Mm-hmm. because you are that way. You are very unassuming of whatever you did and whatever you are doing. Only later people began to talk about your politics. He is a leftist.